Bharat. To brief more on this subject, we have with us higher education, followed by presentation on Toycathon. Then both the ministers will address us. There will be a joint launch, followed by questions on this subject. Thank you. So I will just invite now Secretary Higher Education for initial remarks, please. Respected Honorable Minister of Women and Child Development and Textiles, Madam Smriti Irani ji, respected Honorable Minister of Education, Shri Nishank ji, Chairman AICT, Shri Sharat Budde ji, Principal DG PIB, Chief Innovation Officer, Ministry of Education, officers and friends from the media. It is a great pleasure for me to welcome you in this event of launching of this Toycathon. Ministry of Education has developed expertise over the last 4 years in conducting hackathons and getting solutions to various problems facing this country. The Smart India hackathon, and now many ministries have resorted to having hackathons to get solutions to problems. It's an effort to crowdsource solutions to various problems and get suggestions for implementation. So, toy industry today has been identified as one of the sectors where we can implement Atmanirbharta completely through a concerted effort. It's more than a 1 billion industry, and unfortunately around more than 80% is imported and not manufactured in the country. We had a very vibrant toy industry, but slowly due to imports it has come down and we have become dependent on imports. So a concerted effort over some period will revive the industry, and especially the various toy clusters there in the country which are famous for making various region-specific toys which are known throughout the country nowadays. And we are not only focusing on traditional toys, but also on modern toys and even web-based toys, so that the entire spectrum of toys which any child or any person can demand can be manufactured in the country. So I hope with this crowdsourcing effort, we'll get a lot of solutions and ideas to how to make country totally independent of imports, and not only independent of imports, but also act as a major export potential for almost a 80 billion toy industry in the world. A small PPT has been arranged which will give you the details of it. Thank you very much and welcome again to this toy hackathon. Thank you. Thank you very much, sir. Now I invite Chief Innovation Officer, Ministry of Education, Dr. Abhay to make the presentation, please. Thank you. Respected Honorable Ministers, I will go with the presentation. So a few months back, Government of India actually launched Toy Story as an inter-ministerial mission to promote toy manufacturing, innovation in toys, entrepreneurship in toys in this country. And one of the key initiatives under this mission is Toycathon, where we will reach out to youngsters, school students, faculties, startups, professionals, and request them to conceptualize toys based on Indian ethos, culture, civilization, our heroes, and some of the important events of our past. Another important initiative or aspect of this Toycathon is to conceptualize toys which will promote positive behavior based on Indian value systems.
we would like to promote indigenous material, textiles, artisans, and their concept through this Toycathon fair. Next slide. As I said, this is interministerial initiative. We have 6 ministries participating in this initiative. Ministry of Education along with Ministry of Textile, Ministry of Women and Child Development, MSME, then Ministry of Information and Broadcasting, and eventually all the good concepts will go and will be supported by Ministry of Commerce and Industries so that they can be logically taken forward towards production. Next slide, please. In this Toycathon, we will have 2 major categories because we will be focusing on online games, online toys, as well as physical toys. And the subcategories are enlisted here, where we are looking at electronic toys, IoT-based toys, board games, and in both these categories, we will be getting ideas from school children, faculties, higher educational institutes, startups, as well as professionals and experts. Next slide, please. These are the themes for this Toycathon, and we have currently 9 themes, which will focus from requirements of Divyanga to fitness, as I said, toys based on Indian culture, ethos, environment, toys based on our mission projects like Swachh Bharat, Ek Bharat, Shresh Bharat, and so on and so forth. Next slide, please. This Toycathon will have 3 tracks. Track 1, which will focus on junior level participation, where school kids, along with their teachers as mentors, will submit their ideas. Then in track 2, we will have senior level participation, that is higher educational institutions. And in track 3, we will have startups and professionals. Next slide, please. So this is very unique initiative. In this Toycathon, it's a blended model which we are currently working on. The first phase is going to be online, while the second phase is going to be offline. The first online phase starts today after the launch, where we are putting out about 69 problem statements against which we will be seeking ideas from our participants. Apart from that, there is Open Innovation Corner, where you can submit your own idea. We will go through the ideas, we will segregate those ideas, we will select those ideas, and once these selected ideas will be taken forward to the grand finale, where 3-day grand finale we will have, where students will actually come to workshops and build those toys so that the concepts can be actually converted into a working prototype. Conversion of a working prototype is very, very critical. And to ensure that these working prototypes are good, they are lovable, we are involving design and innovation centers which will help these students in designing look and feel, ergonomics, miniaturization, those kind of aspects. So this grand finale will be organized at 50 centers, and each center will have 5 ATL, Adult Tinkering Labs, associated with it. Each center, the main center, will have about 20 to 25 teams, and each Adult Tinkering Lab, which is the hub, spoke for this, will have about 3 to 5 teams. Students will work at Adult Tinkering Labs, while seniors will work at the main nodal center. And currently we expect about 11,500 to 13,000 participants actually during the grand finale, where they will work on developing or actually creating prototypes of the toys. Next slide, please. So this is the total plan for this Toycathon. We will launch it today. The first phase, or the idea submission phase, is till 20th of January. So in next 15 days, we will be requesting citizens to submit ideas against the listed problem statements, as well as open innovation, where they can submit their own ideas. And the final grand finale will be organized on 22nd of Feb. So next slide, please.
So these are the most important timelines which are available on the website, which will be launched today by hands of honorable ministers. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Veji. Now, I'll request the Honorable Minister, Madam Smriti Irani ji, to address the media. Ma'am. Dhanyavad Datwalia ji. Ladies and gentlemen of the media, members of the press, on behalf of Shri Nishank ji and me today, I welcome this initiative of 6 agencies, departments of Government of India for the launch of the Toycathon. For the first time in the history of our country, we shall see participation of school students along with students from higher educational institutions with regards to needs of the MSME industry in our country, needs that stem from innovation, needs that stem from new design concepts, needs that complement the cultural ethos in which the Indian toy industry hopes to be steeped in. Never before has the fascination of the country ever been captured till such time that the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi pronounced to the entire country the need to ensure that we support local industry with regards to toy manufacturing. I am today, on behalf of my senior colleague Nishank ji, expressing our grateful thanks to those industry participants who have responded to the clarion call of the Honorable Prime Minister and supported Atmanirbhar Bharat with regards to this segment of toy manufacturing. As has been enunciated by Praveen ji, it is a $100 billion international toy market in which India finds a space of our indigenous market to the value of $1.5 billion. We are growing at the rate of 15% per year, but this growth should bear positive fruits and results for our industry. And that is why today the Ministry of Education has my gratitude, because we are reaching out through this Toycathon for the first time to students and faculty members across the country in all schools, colleges, universities, so that they can answer this clarion call of Atmanirbhar Bharat. My compliments to the team of the Innovation Cell and to AICT Chairperson who is amongst us today. And I'm hopeful that along with innovative ideas for the industry, students can also bring forth new ideas for old handcrafted toy clusters, of which 8 toy clusters today enjoy GI certification. With that hope that students and faculty members across the country will rise to this challenge with a particular interest and an intervention for toys for specially abled Divyang children, it is my hope that this Toycathon throws in new ideas that our industry can not only celebrate, but also commercialize. Thank you. Thank you very much, ma'am. Now, I invite Honorable Minister Shri Ramesh Pokhriyal Nishank ji to brief the media. भारत सरकार में हमारे यशस्वी मंत्री स्मृति जी और AICT के चेयरमैन अनिल सर सुबुद्धे जी, सचिव प्रवीण जी, जो प्रकोष्ठ नवाचार प्रकोष्ठ के मुख्य अधिकारी अभय जेरे और PIB के DG, सभी उपस्थित मीडिया के भाई बहनों, सभी अधिकारी वर्ग, जैसे कि स्मृति जी ने जिस बात को चर्चा की है कि न केवल एक विभाग बल्कि सभी मिलकर के जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत है, और ऐसा भारत जो सुंदर भारत हो, स्वच्छ भारत हो, सशक्त हो, आत्मनिर्भर हो, श्रेष्ठ हो, उस 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत की ओर जो हमारे प्रधानमंत्री जी का की मंशा है, उस आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं स्मृति जी को। स्मृति जी ने बहुत लंबे समय से ये खिलौना कितना इस देश में आता है और कितना बड़ा मार्केट पूरी दुनिया का है, 7 लाख करोड़ का मार्केट हो पूरी दुनिया में खिलौने का, और अभी हमारे देश में जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, 130 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, और वहाँ 80% जो खिलौना है वो भी बाहर से आता हो, तो आज इस दिशा में ये हैकाथॉन करने की कोशिश है, क्योंकि
नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमेशा विचार विमर्श, परामर्श और लगातार लोगों से संवाद का जो रास्ता अपनाया है, चाहे मेरी नई शिक्षा नीति का विषय हो, चाहे तमाम नीतियों का हो, जहां दुनिया के सबसे बड़े नवाचार के साथ हम ठोस चीज़ों को निकालते हैं। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि महिला बाल विकास मंत्रालय, जिसको आप लीड कर भारत, जो सुंदर भारत हो, स्वच्छ भारत हो, सशक्त हो, आत्मनिर्भर हो, श्रेष्ठ हो, उस 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत की ओर जो हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा है, उस आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ स्मृति जी को। स्मृति जी ने बहुत लंबे समय से ये खिलौना कितना इस देश में आता है और कितना बड़ा मार्केट पूरी दुनिया का है, 7 लाख करोड़ का मार्केट हो पूरी दुनिया में खिलौने का। और अभी हमारे देश में जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, 130 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, और वहाँ 80% जो खिलौना है वो भी बाहर से आता हो, तो आज इस दिशा में ये हैकाथॉन करने की कोशिश है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमेशा विचार विमर्श, परामर्श और लगातार लोगों से संवाद का जो रास्ता अपनाया है, चाहे मेरी नई शिक्षा नीति का विषय हो, चाहे तमाम नीतियों का हो, जहाँ दुनिया के सबसे बड़े नवाचार के साथ हम ठोस चीज़ों को निकालते हैं। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि महिला बाल विकास मंत्रालय, जिसको आप लीड कर रही हैं, और इस सारे प्रोजेक्ट को भी स्मृति जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, लघु कुटीर उद्योग मंत्रालय है, और AICT जो उसके चेयरमैन भी यहाँ पर हैं, और हमारे देश के 1000 से तो अधिक विश्वविद्यालय हैं, और 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं, IIT हैं, NIT हैं, IIIT हैं, ISR हैं, ISR हैं, तमाम संस्थाएं हैं पूरे देश के अंदर। विश्वविद्यालयों में इतनी समर्थता है कि पीछे के समय में भी हमने इसको प्रमाण दिया है। यदि युक्ति पोर्टल पर आप कोविड के दौरान देखेंगे तो युक्ति जो IITs ने जो शोध और अनुसंधान किए, जिसका आज दुनिया में उसका खुशबू गई है, और युक्ति 2 जो हज़ारों आइडियाज़ हमारे छात्रों के हैं, जो पूरे देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो खिलौना है, जब हम इतना बड़ा देश हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था चाहिए, हम जहाँ ज्ञान की महाशक्ति बनाना चाहते हैं, वहाँ अर्थ की भी महाशक्ति बनाने की दिशा में ये इतना बड़ा मार्केट 7 लाख करोड़ का मार्केट है, और अभी तो हम अपने ही देश की अपनी ही आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये अभियान आज जो हैकाथॉन किया है, इससे पहले भी हमने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन किया है, जिससे जो निकले बहुत सारे स्टार्टअप हमारे निकले हैं, जिन्होंने बहुत ऊंचाइयां स्पर्श किए हैं। हमने पीछे के दिनों में भूटान, सिंगापुर और इंडिया हैकाथॉन किया, दोनों देशों ने, और अब भविष्य में हम आसियान देशों के साथ हैकाथॉन करेंगे। अभी हमने औषधि के लिए कोविड के दौरान भी हैकाथॉन किया था, और आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि चुनिंदे देश के जो छोटे छात्र, स्कूली छात्र हैं, वो ध्रुव कार्यक्रम हमने शुरू किया था। तो ये नवाचार के साथ ये खिलौना का जो उद्योग का भारत लीड कैसे कर सकता है, इस दिशा में जैसे स्मृति जी ने उसको कहा है कि ये जो मंशा है, और मंशा भी भारत की संस्कृति के साथ जोड़ने का है। हम अपने बचपन से यदि देखेंगे तो हम जिस खिलौने के साथ खेलते हैं उसकी स्मृति आज भी बनी रहती है, और वो इतना सशक्त माध्यम है, खिलौना के माध्यम से उसको ज्ञान का अर्जन कराना वो सबसे सशक्त माध्यम है। और इसलिए जब हम भारत केंद्रित शिक्षा नीति को लाए हैं, हमने स्कूली शिक्षा से नवाचार के साथ, तो वो भी इंटर्नशिप के साथ, तो नवाचार हम 6वीं से वोकेशनल स्ट्रीम के साथ लेकर के आ रहे हैं। और स्कूली शिक्षा में पूरी दुनिया का शायद ये देश पहला होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में स्कूली शिक्षा से शुरू करेगा। इन सब को कैसे संयोजित कर सकते हैं, और स्मृति जी ने जो भारत की संस्कृति की बात की संक्षिप्त में उन्होंने, वो उसकी ताकत है। हम अपने खिलौने के माध्यम से कैसे करके, अभी आपको मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब अपने मन की बात में कहा था, तो उन्होंने कहा था कि भारत की समृद्ध संस्कृति, नवाचार और इतिहास को अपने खिलौने और खेलों में समाहित करने का ये समय आ गया है।
अपनी हमारी जो संस्कृति जिस पर ये देश विश्वगुरु रहा है, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान सभी चीज़ में हमने पूरी दुनिया को लीडरशिप दी है। तो वो पूरी दुनिया को लीडरशिप बच्चों को खिलौने के, स्वदेशी खिलौने के माध्यम से कैसे करके हम लोग कर सकते हैं, इसलिए ये टॉय हैकाथॉन आज आयोजित किया जा रहा है। और इसमें स्वदेशी खिलौने में जो भारत की विरासत और सांस्कृतिक संदर्भ हैं, जिसमें बच्चों को सीखने के साथ कुछ ऐसी भी चीज़, गर्व की भावना उसमें समाहित हो सके, ये खिलौने, इसलिए उनको जानकारी हो सके DRDO के बारे में, DEA के बारे में, IITs, IIITs, ISER, NITs, जितने भी राष्ट्र नायकों के बारे में, चाहे हमारे छत्रपति शिवाजी हो, राणा हो, लचित बोरफुकन हो, झांसी की रानी हो, किट्टर हो, चन्नम्मा हो, सरदार पटेल हो, परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता हों, आर्यभट्ट हों, चाहे हमारे जितने पुराने सुश्रुत हों, चरक हों, CV रमन हों, बोस हों, विश्वेश्वरैया हो, कलाम हों, और नागार्जुन हो, बोधायन हो, पतंजलि हो, तमाम वो लोग हमारे सामने हैं जिन्होंने पूरे विश्व के लिए कुछ दे करके, और आज भी वो संपत्ति हमारे सामने, उनके आधार पर ये भारत केंद्रित ये जो विज्ञान और ज्ञान के साथ किस तरीके से उन खिलौनों के माध्यम से हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं, लाखों लोग उससे जुड़ सकते हैं। वो स्थान स्थान पर अभी मैं देख रहा हूँ कि विभिन्न प्रदेशों में ऐसी चीज़ें हैं जिसको यदि हम पूरे देश के अंदर लेकर के जाएंगे तो लोगों को गर्व भी महसूस होगा, देश के बारे में भी जानेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत के से भी जुड़ेंगे। तो इसलिए आज का जो हैकाथॉन है, ये हैकाथॉन कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि जो देश के प्रधानमंत्री जी का मन है कि ये पूरी दुनिया में हम जो ये 7 लाख करोड़ का जो मार्केट है पूरी दुनिया का, और भारत के अंदर प्रतिभा भी है और जुनून भी है और संकल्प भी है और परिस्थितियाँ भी इस समय हैं, इसको कैसे करके जोड़ा जा सकता है। तो आज मैं विशेष करके स्मृति जी की बहुत इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लगातार जब पीछे के समय में भी इन्होंने प्रस्तुतिकरण दिया था तो एक एक चीज़ करके कैसे करके ये देश आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ऊंचाइयों को छू सकता है। और ये जिसकी ज़रूरत है, 33 करोड़ छात्र छात्राएं हैं इस देश में। यदि अकेले उन छात्र छात्राओं की मैं बात करूं तो अमेरिका की कुल जितनी जनसंख्या नहीं है उससे भी ज़्यादा मेरे देश के अंदर छात्र छात्राएं हैं। तो उनको किस रूप में इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है जब हम अपने छात्रों के नवाचार से, और क्योंकि मंत्रालय ने एक नवाचार प्रकोष्ठ जिसका लीड कर रहे हैं अभय जेरे, सिर्फ इसीलिए उसको AICT के साथ जोड़ा है कि जो आइडियाज़ हैं हमारे छात्रों के, बच्चों के, अध्यापकों के, वो कैसे करके आगे बढ़ सकते हैं जिससे हमारा देश फिर वही विश्वगुरु के रूप में स्थापित हो सके, श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित हो सके, आत्मनिर्भर भारत के रूप में स्थापित हो सके। और जो मेक इन इंडिया है और जो स्किल इंडिया है, ये मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया दोनों को जोड़ करके एक नया चीज़ कैसे निकल सकता है, ये इसका हेतु है। और आज इसको शुभारंभ करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि निश्चित ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आज ये नींव का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। Well, that was Union Minister Ramesh Pokhriyal Nishank and the Union Minister Smriti Irani jointly inaugurating the toy hackathon. And the main purpose is to use toys in the educational development as tools, in a sense, for building on the capabilities of children. Also to transform the toy sector, in a sense, because there's huge potential in the toy sector. It's a massive market, it creates opportunities, and to understand the minds of children and to try and bring out the best in them. So let's move on to our developing story now. Our developing story is this. The Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, has ordered strict action against the culprits of the Muradnagar roof collapse case. The Chief Minister Adityanath has ordered to book the contractor as well as the engineer under the National Security Act, and has also ordered to recover the losses from the accused. The act